खारघर में कोई आया नहीं है क्या अभी? देखती हूँ सर, इंक्वायरी हैंडल कर रही थी ना, एक सेकंड सर, मैं कॉल बैक करती हूँ। Manish sir, can you hear me? रेखा, रेखा, ज्योति सरांना होस्ट बनवून जा ना। मुझे होस्ट बनाओ। खारघर में कोई नहीं अटेंड कर रहा है ज्योति ये लेक्चर? जी नहीं, कोई नहीं है सर। ठीक है, ये टीवी वाला जो कैमरा है वो बेंच की तरफ अच्छा है, कोई बच्चा है नहीं तो ठीक है। Good afternoon, sir. Good afternoon everyone. So once we set this right, then we start. ठीक है ज्योति, आप मुझे को होस्ट बना दो प्लीज। ये क्लासरूम नंबर 8 से कोई होस्ट है? जी सर, मैं करती हूँ। ये ना हैंग हो गया है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, क्लोज भी नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता है। मैं अच्छा। करती हूँ। हाँ तो ये क्या नाम है इसका? को होस्ट दूसरा कौन है? जी सर, हो गया सर। मुझे होस्ट बनाया आपने? हाँ सर। होस्ट नहीं मतलब को होस्ट। सर हो गया आपको होस्ट। ठीक है, अगर कोई खारघर से नहीं है तो आप उसको वैसे ही रख सकते हो एंड आई विल स्टार्ट। अगर कोई बच्चा आता है तो फिर आप बैठाना और वो क्लासरूम को भी ज्वाइन करवाना। चलिए guys, now you time to put on your video so that we start. I only see Jay and Chinmay. Good afternoon. Okay, I see Vinayak now. जल्दी जल्दी अपने videos on करो so that I can start. Who else has joined in? Pari is there. Simar, Man. Okay. Then Nishtha I see now. Ishan and Iksha, you need to put on your videos so that we start. Okay, so the topic in hand right now that we'll discuss, that comes from chapter 9. And I think we are in our last leg of SAT classroom preparation. By 18th September or so, 2 more weeks and we should finish this, which means आपको अभी मैथ्स के 2 और क्लासेस मिलेंगी and both the classes would be physically from Kharghar branch. This class is particularly happening online remotely as I'm taking this remotely. So we are doing chapter 9 today, guys. Chapter 9 happens to be mean, median, mode,
standard deviation नहीं, surveys, conclusions, box and whisker plots, so a lot of things. If you ask me, fairly interesting and important chapter. You should have somewhere around 5 to 6 problems. मतलब almost 10% of SAT paper coming from what we are discussing today between mean, median, mode, surveys and box and whisker plot. So एक एक करके लेंगे. I have my working space ready, all my tools are ready. Let me replace this. Can you see this centrally on your screen? Working space दिख रहा है, मेरा whiteboard दिख रहा है, copies दिख रही है, ठीक है? Yes. So we are starting with chapter 9 today. We are doing chapter 9, and we are looking at these concepts. तो quickly एक एक करके ये concepts देखते जाते हैं और मैं आप लोगों से बात करता जाता हूँ because this is something that you guys already know. एक मिनट रुको, मुझे ये फिल करने दो ताकि मैं सबको देख सकूं. Okay. निष्ठा. So Nishtha, I start with you. ये जो मेरा screen दिख रहा है, इस पे मैंने एक word लिखा है. What do you mean by this? Sir, the word you have written. Mean का क्या मतलब है? Unmute करो. So mean is basically the average of the total. Okay. So mean of quantity. So you have a data set. When you're supposed to find mean, you're basically finding average. Mean here could mean simple average, where what you're doing is you're adding different quantities. आपके पास n quantities है, आपने उन सबका sum किया and you divided by total number of quantities. Let's say capital N है आपके पास, so you divide it by n, yeah, small n if you have capital total number. So sum of all quantities divided by total number of quantities that you have. So I'll write it as total number of quantities that you have. This is mean, जिसको आप average भी बोलते हो. Average is that representative value. It is also called central tendency of that data set. So mean हम सबको निकालना आता है, average हम सबको निकालना आता है. So it is very important कि without working too much into formula, हम इसके कुछ questions को करें. But this is what mean is. Iksha Nair, what do we mean by median? Any idea on this, Iksha? Sir, median is usually the middle term of all the outcomes. Okay. I'll not say you are wrong, Iksha, but थोड़ा सा incomplete है. You said middle term of all the outcomes. The middle term of the outcomes arranged in a particular order, like ascending order or descending. Yes. So when we, yeah, that's very good, Mark. So median, जब आपको median निकालना है, there are two important things. So Iksha, I think you knew it, but आपने वैसे बोला नहीं. Median is in an arranged data set. The data set has to be arranged either in ascending order or in descending order. So in arranged data set, you go for the middle value. You pick the middle value in an arranged data set. Now let's say I have odd number of data. In my set, I have odd number of data. Let's say that is 7. तो इसको मैं arrange करूंगा. ये मेरी first 3 values हैं. This is my 4th value, and then I have 5th, 6th, and 7th. So 1, 2, 3, 4th value, 5th, 6th, and 7th value. Arrange करने के बाद ये जो middle value है, this is median. Okay, Simar. So this could be increasing order or decreasing order. But let's say if I have even number of data, अगर data even है, तो median कैसे निकालेंगे? परी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. हाँ, कुछ तो है, बट आई थिंक तुम मुझे ये बोलने की कोशिश कर रही हो कि मिडिल 2 वैल्यूज का एवरेज ले लो आप. I'm saying n by 2 plus 1. N by 2 plus 1. And what is n? Total number of values. Yes. Okay. So let's say if I have total 8 number of values, then median will be given by n plus n by 2, which is 4 plus 1. 5th value will be median. That's what you're saying, Pari? Yes. No, not exactly. So even number of values अगर आपके data set में है, let's say n1, n2, n3,
N4. Of course, you'll have to arrange them. मान लो ये arranged हैं N6, N7, and N8. So what you will do is you will pick n by 2th value, and you will pick n by 2 plus 1th value. In this case, you will pick N4 and N5, and you will find average of N4 and N5. This will be your median. So you will pick n by 2th value, you will pick n by 2 plus 1th value, and you will find average of these two values. ये जो value आएगा आपका median यहाँ कहीं आने वाला है. This will be your median. अगर even number of data set है तो बोलो चिन्मय अग्रवाल, समझ में आ गया? Yes, sir. और अगर N4 is equal to N5 तो उनका average वही होगा जो N4 है, N5 है, वही आपका median बन जाएगा. Okay, Vinayak Patil. What do you mean by this? अच्छा, before you go down to that, मैं फिर बोल देता हूँ, ये ध्यान रखना भाई, this is very important. हम ये भूल जाते हैं और सीधा middle value को attack कर देते हैं. Arranged data. Mode. Vinayak Patil. Yeah, sir. Yeah, sir. So the mode is the most frequently occurring observation. Absolutely correct. So mode would mean the most frequently occurring data in your data set. And mostly guys, आपके SAT में आप लोग unimodal data से ही काम करोगे. वो data value जो सबसे ज्यादा आता है. तो किसी data set में there will be only one value which will be occurring most, उसको unimodal बोलेंगे. अगर दो ऐसी values हैं जो equally most occurring हैं, then वो bimodal data हो जाएगा. But SAT scope is restricted to unimodal. So let's say my values are 3, 4, 6, 6, 8. So mode becomes 6. You know, the most frequently occurring value becomes mode of data set. So mean, median, mode. Concept wise, वो इतना ही concept है. This is all you should know. When it comes to application, it really becomes very, very interesting. तो ये इतना सा समझ में आ गया क्या आप लोगों को? Yes. So I move on. तो मेरा structure कैसा है? जैसा मैं हमेशा करता हूँ. We will do some 15 to 30 minutes of theory discussion. After we have done that, we will attack the problems. The lecture is divided in two parts. We will do mean, median, mode, percentile, box whisker plot in first part, and survey, conclusions, वो सब types of survey, confidence interval, margin of error, वो statistics और survey वाला वो सारा part हम second part में करेंगे. So let's move on to the percentile concept. तो mean, median, mode आपको समझ में आया. अभी मैं questions बाद में लूँगा. पहले हम percentile पे आते हैं. Who is going to define this? What do you mean by percentile? Not percentage. Percentile. Sir, it is Statistics के kind of a perspective से rank बताओ. in. Sir, Yes, it is ma'am. kind of a rank in terms of percentage. Rank in terms of percentage. Like मुझे पूरी तरह तो समझ में नहीं आया. You need to give me ये पूरी like तरह this समझ. many people are below you, like. अच्छा. So मुझे ये समझ में आ गया कि तुमको पता है but you are not able to express it. Yes. So for example, it happens in many of the competitive exams. और आपके SAT score card में along with your score, you will get your world percentile score भी आएगा. 98th percentile, 99 percentile. जैसे CAT exam होता है IIMs के लिए, IITs होता है, you get your percentile rank. Okay, so that is right. How would you define percentile? Okay, what do you mean by cent? ये इसका क्या मतलब है? 100. 100. Percent means per 100. Yes, guys. So percentile का मतलब हुआ, इसको समझो. Let's say I have got some quantity. Let's say I have IIT aspirants in India. And I know that there are 15 lakh IIT aspirants in India. 15 लाख बच्चे IIT का एग्जाम लिखते हैं. So let's say वो 15 लाख को मैं इस बॉक्स में फिट कर सकता हूँ. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. Percentile means that you create 100 equal part of that whole. You create 100 equal part
of that whole such that each part represents what? Each part represents 1% of that data. तो अगर मैंने बोला 15 लाख बच्चे IIT का एग्जाम लिखते हैं, इसका 1% कितना होगा? Quickly, 1% of 15 lakhs. 15,000. 15,000. So that means each part has 15,000 students into it. So percentile means I have created 100 equal parts of something where each part represents 1%. तो ये जो मान ने बोला उसने एकदम सही बोला. You know, percentile is percentage of something और आपके ऊपर कितने बच्चे नीचे कितने बच्चे. He was trying to explain, but technically it means this. Now, when I say that somebody has got 99 percentile, इसका मतलब ये है कि इस particular बच्चे के नीचे रैंक पे there are 99% of the data. तो 99% of the data हो गया. 14,85,000 students are below this student and around 15,000 students are above this student. ये समझ में आया percentile? निष्ठा धवन समझ में आ गया? SAT रजिस्ट्रेशन कर लिया तुमने? Yes, sir. अरे वाह, वेरी गुड, बधाई हो, अच्छी बात है तो. हाँ, तो आगे चलते हैं. तो ये है परसेंटाइल. अब अगर मैं ये लॉजिक समझ में आ गया, किसी चीज को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो सच दैट ईच पार्ट इज 1%, दिस इज परसेंटाइल. ऑफ कोर्स ये भी रैंक ऑर्डर में है, ये टॉप टू बॉटम कर दिया हमने. अब मैं आगे बढ़ता हूं. अगर ये परसेंटाइल होता है, बाय द सेम लॉजिक कैन यू गाइस डिफाइन व्हाट इज क्वार्टाइल फॉर मी? क्वार्टाइल क्या होगा बाय द सेम लॉजिक? So 1/4 of the total number of 25%. Right. So basically I have got something. I'll divide that into how many equal parts? Four part, such that each part represents 25% of that data set. ये हो गया क्वार्टाइल. SAT में ये वाला कॉन्सेप्ट क्वार्टाइल स्कोप में है. क्वार्टाइल का नॉलेज स्कोप में है, परसेंटाइल नहीं है, बट परसेंटाइल से मैंने बिल्ड किया. सो क्वार्टाइल मींस यू डिवाइड समथिंग इन 4 इक्वल पार्ट्स. You divide something in 4 equal parts such that each part represents 25% of this data. संग्राम पाटिल, विनायक पाटिल बोलो, समझ में आया? हाँ सर. ठीक है. So ईशान is also there and और कोई है इस क्लास में? जय, परी, चिन्मय, ईशान, मान, इक्षा, निष्ठा, who else? And सिमर. हाँ सिमर, समझ में आ गया तुमको? तुम दिख नहीं रहे थे मुझे. Yes, sir. ओके. तो अब ये जो क्वार्टाइल है ये SAT में आता है, और SAT में ये आता है इस नाम से, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. आप अगर उसका सिलेबस देखोगे तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के नाम से, जो कि कुछ भी नहीं है, क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट है. तो इसको समझते हैं. व्हाट इज बॉक्स एंड विस्कर? विस्कर वैसे आपको पता है, मूंछें जो कैट की होती हैं, वो वही है. एक्चुअल मतलब भी वही है इस कॉन्सेप्ट में. तो इसमें क्या होता है, this is a way to represent data, like you have pie chart, you have line graph, you have tables, ये सब है ना, वो सब. what are those? Those are tools to represent data. Box and whisker plot is another such tool. So in box and whisker plot, what will happen is you will have a box which will be horizontally lying. The box will have 2 whiskers, 2 मूछें होंगी उसकी, एक लेफ्ट में एक राइट में. और ये बॉक्स में somewhere inside this box there would be a line. I'm using a blue, a green लेता हूँ. Somewhere there will be a line. ऐसे line होगा, जरूरी नहीं है बीच में होगा, but there will be a line somewhere. Now let us understand the nomenclature of this box. तो नीचे एक number line है, okay, and let's say एक example लेके चलता हूँ. Let's say we are talking about Vinayak Patil having a big farm where he grows watermelon, and the number line gives weight of these watermelons. Vinayak Patil, you don't mind them, right? So watermelon है, हाँ,
और ये वाटरमेलन्स को ग्रो किया गया है और उनको इस नंबर लाइन पे उनके वेट के हिसाब से लेफ्ट टू राइट हमने इंक्रीजिंग वेट में रखा है। तो आई हैव गॉट अ वाटरमेलन व्हिच इज 20 kg का यहाँ पे, let's say somewhere here, then let's say here I have got ये वाले point पे I have got a watermelon which is 18 kilos. Here somewhere I have got a watermelon which is 8 kg. Here I have got a watermelon which is 6 kgs. Here I have got a watermelon which is 4 kgs. And यहाँ 4 से नीचे वाले watermelons हैं, यहाँ 20 से ऊपर वाले watermelons. Okay, let's say this is the kind of data I have. Now, how do you understand this, guys? Remember, like I said, quartile को इसमें लगाना है हमको। ये जो पहला whisker है और ये जो बॉक्स का स्टार्टिंग है, ये आपका quartile 1 है, लोअर एंड ऑफ द डेटा है, इसको मैंने अरेंज किया है। तो विच मीन्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 पार्ट हैं, इसमें 25% ऑफ वाटरमेलन है, ये डेटा 25% ऑफ वाटरमेलन का है, ये डेटा 25% ऑफ वाटरमेलन का है और ये वाला डेटा 25% ऑफ वाटरमेलन का है। ये 4 पार्ट दिख रहे हैं आपको। ये मेरा टॉप क्वार्टाइल है, ये मेरा टॉप के नीचे वाला क्वार्टाइल है, ये मेरा बॉटम के ऊपर वाला क्वार्टाइल है, ये मेरा बॉटम क्वार्टाइल है। बोले समझ में आया? Yes, sir. This point out here is called quartile 1, इसको Q1 बोलते हैं। This point out here is called quartile 3, इसको quartile 3 बोलते हैं। तो Q1 Q3 बोलते हैं, बस that's all। अब आप खुद मुझे बता सकते हो, टाइम लेके सोच के बताना, what is this green line? Q2. No, ये इतना सिंपल नहीं है मान, मतलब इतना, हाँ क्या है ये? मीडियन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये जो ग्रीन लाइन है ये मीडियन है। देखो 50% डेटा ऊपर, 50% डेटा नीचे और ये अरेंज्ड है। सो दिस लाइन विल नॉट बी टोल्ड कि ये मीडियन है, ये लिखा नहीं होगा, ये लिखा होगा Q1 Q3। तो ये एक्चुअली Q2 है, आई एग्री, बट उससे कुछ समझ में नहीं आता। दिस इज मीडियन, ये मीडियन का लाइन होता है। So if I ask you, what is the median weight of watermelons growing at Vinayak Patil's farm? Answer is 8 kg. 8. समझ में आ गया? Yes, sir. Right? Now this question goes to Pari Kulkarni and then everybody else will participate. Pari unmute करो और आंसर ट्रू और फॉल्स में है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है। ओके? हाँ मैं क्वेश्चन बना रहा हूं पर 1 मिनट। 4, 6, 8, 18, 20। ओके, 25% of all watermelons on Vinayak Patil's farm weigh more than 18 kg. True या false? True. True. 25% of all watermelons growing on Vinayak Patil's farm weigh more than 18 kg. ये ट्रू है क्योंकि ये टॉप 25 परसेंटाइल डेटा है। ओके, मान Yes, sir. ट्रू एंड फॉल्स। 50% of watermelons growing on Vinayak Patil's farm weigh less than 8 kg. Yes, sir. True. That's true because 50 इस लाइन के नीचे 50% डेटा है, तो अगर वो thousands watermelon ग्रो करता है तो 500 watermelons का वेट 8 kg से कम का है ना? सिमर 75, this is to you, 75% of watermelons on Vinayak Patil's farm weigh less than 6 kg. True या false? False, sir. False. It is not 75, it is 25. ये समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, कौन बचा? इक्शा नायर, अनम्यूट करो। ट्रू एंड फॉल्स। Average weight of watermelons on Vinayak Patil's farm is 8 kg. True या false, Iksha? So false. Okay, good. So next question to you, Iksha. What is the average weight of watermelons growing on his farm?
बोलो 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 बोलो. Are you calculating something? Diksha, what is the average weight of watermelons on his farm? So 10. Hello, hello, hello. Are you guys there? I think I lost in between, is it? Yes, sir. Yes. Sir. Now we can hear you. Oh, so sorry. So sorry. So I was talking to who? Iksha. Yes. So what is the average weight of watermelons on his farm, Iksha? Sir, will it be 10? 10. Man? I guess we have to add up all these and divide by 5. Yeah. Hello, 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 hello. हाँ man, sorry. I have I a guess power we loss have- here, so मैं अभी hotspot से चला रहा हूँ. हाँ. So I guess we have to add all these up and divide by 5 to get the mean. अच्छा ठीक है, तो विनायक पाटिल से पूछ लेते हैं. पाटिल साहब बताइए एवरेज वेट ऑफ वाटरमेलन्स ऑन योर फार्म. Yeah, sir. Same, sir. 11.2. Okay, Ishan, what do you Yes, sir. say? I think Average it'll weight be, of watermelon. yeah, I think it'll be Huh? anything in between Q2 and Q3 points. It'll be anything between the median and Q3, somewhere around there. More towards Okay. Q2. अब आप क्वेश्चन ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग. मेरा क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ वाटरमेलन्स. अभी तक मुझे राइट आंसर नहीं मिला है. निष्ठा, परी, एनीबडी, चिन्मय. Sir, I don't think it can be calculated with the information given. Absolutely right. Answer is cannot be determined. Answer is ये calculate नहीं किया जा सकता from the given data. Answer is data is insufficient. क्योंकि भाई आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या दिया है? मैंने आपको ये बताया है कि कितना परसेंटेज इन नंबर वो वाटरमेलन है. कितने वाटरमेलन्स हैं नहीं पता. मुझे ये पता ही नहीं है वाटरमेलन्स कितने हैं और ईच वाटरमेलन का वेट क्या है. भाई अगर मुझे ईच वाटरमेलन का वेट पता है और कितने वाटरमेलन्स हैं तभी मैं निकाल सकता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और तब मैं एवरेज निकाल सकता हूँ. From the given data set, answer is data is insufficient. We cannot find what is the mean weight of watermelons on this farm. बोलो भाई समझ में आ गया? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. ये इसके विस्कर्स हैं, मूछें हैं. इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना है. अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बिल्ड करके जाता हूं गाइस. Q3 माइनस Q1. नहीं रुको, एक और कॉन्सेप्ट अभी टेस्ट कर लेते हैं. So let me ask Ishan, what will be range of the given data set? Unmute karo Ishan. Oops. Okay, yeah. So range will be from 4 to 20, right? Ishan, No? this is not the right way to present the answer. Nishta Dhawan, range क्या है इस data set का? 4 included, 4 excluded to 20 excluded? No, Pari Kulkarni. Sir, range is the highest value minus the lowest value, right? Oh yeah, okay. Should forgot. It will हाँ be तो minus 16. 16 किलो. Yes, 16. 16 किलो इसका रेंज है. करेक्ट. तो रेंज है 16 kgs. इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको एसएटी में काम आएगा. ये भी उसके स्कोप में है. इंटर क्वार्टाइल रेंज. एक होता है रेंज ऑफ डेटा सेट, एक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज. This is given by Q3 minus Q1.
Q3 क्या है अगर आप देखो मान Q3 is 75th percentile. Do you agree? Yes. And Q1 is nothing but 25th percentile. 25th. अब इसको मान लो ये हमने वाटरमेलन लिया है, इसमें एसएटी स्कोर मान लो किसी भी एक कॉलेज का, ऑफ कोर्स ये नंबर चेंज करने पड़ेंगे, तो उसका 75th परसेंटाइल पे बच्चा आ रहा है उसका क्या स्कोर है, उसका जो 25th परसेंटाइल पे बच्चा आ रहा है वो क्या स्कोर है, और जो लास्ट बच्चों को एडमिशन दिया उसका क्या स्कोर है, जो टॉप बच्चों को एडमिशन दिया उसका क्या स्कोर है, वो कॉलेज के मीडियन स्कोर क्या है, जो बच्चा मीडियन पे उसका स्कोर क्या है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है 75th परसेंटाइल minus 25th percentile. Q3 minus Q1 is called interquartile range. Sir, ठीक है guys? हाँ ईशान. so basically tells us the range in between of the box, right? Yes. Okay, and Correct. and on many college websites also they have like middle 50% of the students admitted, so it will be this box only, right? Similarly. So if you really look into that data, अगर आप देखोगे तो most of the universities will give you 75th percentile and 25th percentile का range of their SAT scores. क्योंकि यहाँ पे कुछ एक नया कॉन्सेप्ट होता है आउटलायर, वो भी मैं समझा देता हूँ, बट वो आपको यही डेटा देते हैं। तो उसका इंटरक्वार्टाइल रेंज will be Q3 minus Q1. Yeah, that's what statistics says. Then there is a concept called outlier. What does this mean? इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग भी बताओगे तो चलेगा। स्टैटिस्टिक्स में आउटलायर का, हाँ बोलो। A point which is outside the graph or rather far away from the graph. Okay, so this is an intelligent and almost correct answer. Outlier का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, वोकैबुलरी मीनिंग क्या है इसका? Something which lies outside, right? Outside. Okay. तो आउटलायर्स आर दोस पीपल, अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको सोसाइटी या साइकोलॉजी में लगाओगे और इंग्लिश ऑक्सफोर्डियन डिक्शनरी उठा के और उसका मीनिंग ढूंढोगे, तो आउटलायर मींस दोस पीपल और दोस एंटिटीज व्हिच वुड बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द सोसाइटी. They are not society, but they behave very differently from the society and they don't go by the masses. Statistics में भी आउटलायर का कुछ ऐसा ही मतलब है. स्टैटिस्टिक्स में आउटलायर्स का मतलब वो डेटा सेट है जो आप, ये जो बाकी डेटा है इससे कहीं दूर आके कोई एक वाटरमेलन जो है, मान लो ये 35 किलो का है, एक वाटरमेलन, ये 1000 वाटरमेलन ग्रो करता है विनायक पाटिल, बट एक वाटरमेलन जो है वो 35 kg का है, ये आउटलायर है. या एक पर्टिकुलर वाटरमेलन हाफ अ केजी का है, दिस कुड बी एन आउटलायर. तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई आउटलायर क्या होता है? तो गाइस मैं आपको ये बता रहा हूं, बस ये लास्ट है स्कोप ऑफ एसएटी. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल हैव टू फाइंड 1.5 टाइम्स ऑफ आईक्यूआर. ये वैल्यू फाइंड करो 1.5, तो आईक्यूआर निकालो, इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालो, उसका 1.5 टाइम्स करो. तो यहाँ पे इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या आया? 6, 18 minus 6, 12. 12 का 1.5 times 18. Okay, this is your interquartile range. Interquartile into 1.5. अब how do you identify outlier? So outlier दो एंड पे हो सकता है. आउटलायर, हाँ मैं कंप्लीट करता हूँ. आउटलायर दो एंड पे हो सकते हैं, एक लोअर एंड ऑफ डेटा के बाहर कुछ पॉइंट्स हैं और एक हायर एंड ऑफ डेटा के बाहर कुछ पॉइंट्स हैं. तो लोअर एंड पे आउटलायर आइडेंटिफाई करने का रूल है, Q1, all the points which are less than Q1 minus 1.5 IQR. वो पॉइंट्स जो Q1 में 1.5 IQR माइनस करके उसके बाद जो पॉइंट्स होंगे, so points which are less than this are outliers at lower end. हायर एंड पे आउटलायर कौन होगा? हायर एंड पे आउटलायर होगा पॉइंट्स व्हिच हैव अ ग्रेटर वैल्यू देन Q3 plus 1.5 IQR. Yes. So हमारे केस में Q3 was 18 plus 1.5 IQR was 18. So any watermelon which weighs more than 36 kg in our data set will be considered as a outlier वाला watermelon. ये दो चीजें आपको याद रखना, ये प्रिंटेड नहीं रहता है. आउटलायर निकालने का तरीका,
अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कभी आता है कभी नहीं आता है, एक क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है. एंड आई हैव सीन कि ऑफ द 5 अटेम्प्ट्स दैट हैपेंस 2 या 3 अटेम्प्ट में आता है और वही 2 या 3 अटेम्प्ट में नहीं आता है. तो अब इट प्योरली डिपेंड्स ऑन योर लक, बिकॉज इट्स अ इजी प्रॉब्लम. आएगा तो आउटलायर तक मैक्सिमम पूछा जा सकता है. तो वी विल डू अ क्विक रिवीजन गाइस. बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्वार्टाइल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. क्वार्टाइल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? डिवाइड समथिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट रिप्रेजेंटिंग 25%. ऐसा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनता है. दिस एंड इज कॉल्ड Q1. ये बॉटम वाला क्वार्टाइल है, ये टॉप वाला क्वार्टाइल है. दिस इज Q3. बीच में जो लाइन है जरूरी नहीं है एग्जैक्टली मिडिल में हो. दिस इज योर मीडियन का लाइन. ये नंबर लाइंस है. IQR Q3 माइनस Q1 होता है. आउटलायर्स निकालना है तो 1.5 टाइम्स IQR करो. अगर तो वो स्पेसिफाई नहीं 1.5 क्यों किया, आया? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, वो स्टैटिस्टिक्स में ये लोग 1.5 लेते हैं इफ नॉट स्पेसिफाइड. अगर स्पेसिफाई किया है कि वो क्वार्टा आउटलायर का रूल इज 1.252 तो वैसे करना है. तो इज इट फिक्स? इट इज नॉट फिक्स. बट इफ नॉट मेंशन्ड देन इट इज 1.5. So that's how they have defined it in statistics. जैसा बेल कर्व में वो लोग डिफाइन करते हैं वैसा उन्होंने इसको डिफाइन कर रखा है बस. So ये आउटलायर, लोअर एंड, हायर एंड. This is what you should know. So this is my first leg of theory. Mean, median, mode, percentile, quartile, box and whisker plot. ये सब क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस. तो अब हमारा एक पार्ट बचता है सर्वेस का. तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. मुझे बताओ कैसे करना चाहते हो. आई कैन टेक यू थ्रू सर्वेस का पूरा थ्योरी एंड देन वी डू ओनली प्रॉब्लम्स, और वी गो टू आउटलायर वाला एंड मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस एंड कम टू सर्वे बाद में एंड डू थ्योरी लेटर. बोलो क्या करना है. First let's do questions, sir. Theory later. हाँ, तो बिकॉज देयर आर सम पीपल हु आर यॉर्निंग. वो है ना राइस वाइस खा के आए होंगे अभी लंच में अच्छे से, तो दे हैव स्टार्टेड यॉर्निंग. आई थिंक बेटर डू प्रॉब्लम्स. सो वी गो टू क्वेश्चंस गाइस. अब ये क्वेश्चंस आपके बुक में हैं. हाँ बोलो. Sir, could you just show the first page? I was not there in the class at that time. Just 1 second, I'll read it. फर्स्ट पे ये मीन मीडियन मोड वाला. Yeah, just seeing the question. Sum upon total. Okay. We don't have the 2 things, right? Sigma fixie upon sigma phi. No. So हाँ, good question. वो भी आएगा. And give me time. When I come to that question, I'll talk about it. Yes, it will also come, which is where you multiply the frequency of that data. यहाँ पे assumption है कि अभी वो. So I'm not going to that right now, but yes, it is there in scope. When I come to such a question, I'll talk about it. Yeah, because I forgot the formulas after 10th. I forgot it. So that's नहीं तो इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं चाहिए जो हमने लिखा है, इतना ही फॉर्मूला चाहिए. The trick is how do you apply them when there's a question. Yeah. चलो, so we go to questions. अब आप सबके पास बुक है, right? All of you have book. So I want you to go to your book and solve. और मुझे chat box में आंसर भेजना है आपको. हाँ, question number 9.1, question number 2, and I give you 30 seconds. So could you repeat which question? Question 9.1 exercise का question number 2. Second question 9.1. मान correct. Correct जय बोरा. Yes Chinmay, correct. Ishan correct. Vinayak correct. Pari correct. Simar waiting. Nishtha, Iksha. Nishtha correct. Simar and Iksha. चैट बॉक्स में भेजो. करेक्ट मिस नायर. सिमर मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा. इतना टाइम क्यों लगा? Yes, Simar, correct. So all of you have got this right. In case you want me to discuss, let me know. Otherwise, I go to next problem.
Can I go to next problem? Yes, sir. ठीक है. Discussion चाहिए तो बोलना, but all of you have got this right. I want you to solve question number 5 now. Beautiful problem, 90 seconds, 1.5 minutes. Excellent SAT problem है ये. Please solve this. Question number 5 from 9th chapter. Okay, Ishan, registered. Answer registered. We have some more time, so I would want you to recheck. This is a very good problem, which is actually checking your concepts. What happened, guys? Okay, Ishan, I got answer from Ishan Man. That's all. Let me know if you want me to solve this. Okay, Chinmay. Yes, Man. Now correct. So Chinmay and Man, you guys have got this right. अब इसको solve करते हैं. बहुत time लगाया आप लोगों ने. So what I am doing is I am going to my whiteboard, working space. इसको spotlight करते हैं. Mr. Dhawan, what happened? Sir, बोलो. हाँ. I'm not sure about the answer, but it is C. Which option? Option C. C for cat. Yes, sir. ठीक है. बताओ कैसे? Answer correct है. Sir, Consider integers and not real numbers. मैं read कर रहा हूँ, उसके बाद बताना. The least and greatest number in list of 7 real numbers are 2 and 20 respectively. The median of the list is 6. The number 3 occurs most often. Which of the following could be average of the numbers in the list? Roman 1 7, Roman 2 8.5, Roman 3 is 10. Go ahead. sir, it is given that the number 3 occurs most of the time, so the numbers can be 2, 3, 3, and then 20 at the last, and then the middle numbers can be, we can take it as X or Y. Correct. सही बोल रही हो. रुको. 1 2 3 4 5 6 7. I've got 7 numbers. What she's saying is that 2 to 20 है, and because median is 6, so they are arranged. So sixth, जो sixth value है वो fourth पे आएगा, fourth place पे.
because 6 is the median. 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ, right Nishta? Yes, sir. And 2 would come here. Now 3 is most occurring. 2 ही places बचे हैं 6 से नीचे, तो ये दोनों 3 हो जाएंगे. 20 being the highest, ये 20 यहाँ पे आएगा. I don't know about the value on 5th and 6th place. Go ahead. Sir, moreover, when we have to substitute the value of x and y, which is the 5th and 6th place, we Okay, can C has substitute taken that as, as x and y. so we can substitute as the lowest value and the highest value. So the lowest value we see it won't be 3, 2, or 20. So we can take it as 7 and 8. 7 and 8. And yes, sir. हाँ And सही when we किया है, talk about, सही किया है. So what she's saying is हाँ एकदम सही है निष्ठा. 6 and 6, 12 and 2, 14 and 20, 34 plus x plus y. अगर इनका एवरेज आपको 7 बनाना है, पहला वाला रोमन 7 है ना, अगर 7 बनाना है तो इसको 7 से डिवाइड करोगे, मतलब इनका सम होना चाहिए 34 plus x plus y should be equal to 49. 49 होना चाहिए. ईशान देखो, Yes. अगर ये 49 होना चाहिए मतलब x और y का सम 15 होना चाहिए. Yes. एंड both the values they cannot be equal, क्योंकि अगर वो इक्वल हुए तो 3 मोस्ट occurring नहीं रह जाएगा. The only possibility for x and y to take some value is 7,8. Yeah. और कोई वैल्यू नहीं है तो ये तो पॉसिबल है. मैं रोमन 3 लेता हूँ. रोमन 3 बोलता है कि इनका एवरेज 10 है. अगर एवरेज 10 है तो कैन आई से सम 70 है? Yes, sir. अगर ऐसा है तो कैन आई से x plus y 36 है? Yes, sir. 36 बनाने के तरीके बताओ. दो नंबर्स का सम 36. 18 and 19. Sorry, 17 and अच्छा? 19. 17 and 19. हाँ 17 and 19. So 17 and 19 आप लोगे तो वो 36 बन जाएगा. This is one possibility and this is the only possibility. तो मतलब 7 भी एवरेज हो सकता है, कैन बी पॉसिबल पूछा है, और यहाँ पे 10 था कहीं, 10 भी पॉसिबल है. बट मुझे एक बात बताओ, 34 plus x plus y is equal to 8.5 into 7 होगा. 8.5 into 7 will be 59.5. और वो बोलिए. इंटीजर नहीं. हाँ वहां पे लिखा है. अच्छा तो इसका मतलब x plus y का सम क्या होना चाहिए? x plus y होना चाहिए 25.5. This is not possible because when you are adding two integers, sum will be an integer. It's given in the question in the first line, consider integers and not real numbers. ऐसा कुछ दिया है ना वहां पे? But sir, there's one more thing to throw us off, which is given least and greatest numbers in a list of 7 real numbers, and they've written on top consider integers and not real. That is also that throws off, right? So in 7 real numbers, I mean integers are always real numbers. Yeah, integers are always real numbers, but you can also say that some of them are, if they are not real, suppose, then if some of them are like they are not integers, but they are real numbers, so then you wouldn't consider them, right? So that would also become consider them. Yes. So you will not consider them. So you'll only consider integers, right, Ishan? Yes, sir. अब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब 8.5 का एवरेज लाना पॉसिबल नहीं है. आंसर इज 1 and 3 ओनली. Okay. What I had done, sir, I had used the 10th. There's one formula: 3 median is equal to mode plus 2 mean. I tried that at 0.5, and then I was like, okay, the closest value to that is 7, so take that. ठीक है, चलो ये ध्यान रखना है. अब आई वांट यू टू, अच्छा ये तो आप लोग के पास बुक है, सो आई नीड नॉट शेयर द क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट आई वांट यू टू सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर 16. अगेन फ्रॉम SAT पेपर्स, क्वेश्चन नंबर 16. आई गिव यू 1 full minute. समय लगेगा, आराम से करो इसको. ये भी एवरेजेस पे बेस्ड है.
So guys, I am reading the problem statement. What is the lowest score she can get from the remaining two judges? So you should read it as, what is the lowest score she can get from any of the remaining two judges if she still want to finish first? What is the lowest score she can get from any of the remaining two judges if she still wants to finish first? Who's this? Ishan. Correct, Ishan. Very good. Very correct. Man, correct. Very good, guys. अच्छा क्वेश्चन था ये. जय, correct. Simmer, correct. Nishtha, correct. So Pari, we have your friend in one of our batches now for December attempt. Yeah, he's in Kim. C3, right? Oh, Kim Mohite. Kim is the, okay. We have one more classmate in C3 as well, sir. Yes, sir. We have Sarvarth also Also there in C3. in C3. Acha, oh, Sarvarth, Sahas Chavan. Yes, sir. Sahas is also there. Oh, we have so many known people. Competitive है, जैसे तुम लोगों का है वैसे ही वो बैच भी बहुत competitive है. I was the one who told Sarvarth that join SAT coaching. He wanted Yes, to sir. give- Kim had called me before, so she only asked me for हाँ, that. उसने रेफरेंस दिया था आपका. चलो, सिमर, निष्ठा, वेरी गुड. अब किसका आंसर नहीं आया? ये तो सबने राइट किया है. नहीं, इक्षा, व्हाट हैपेंड? सर मेरा नहीं है. यस, इक्षा, सर मेरा नहीं है. यू नीड हेल्प विनायक, मैं करूं इसको? Sir, could you show Yes, how sir. to do this? चलो, so Iksha Nair, please read it loudly. A figure skater competing at a local competition needs a mean of 5.8 out of a total 6.0 to win the first place medal. If there are 3 judges and one of them gives her a 5.5, what is the lowest score she can get from any of the remaining 2 judges if she still wants to finish first? So एक जज ने 5.5 दे दिया इक्षा. She needs this score विनायक 5.8 to win the medal. There are 2 more judges. 2 बचे हैं, इनमें से किसी एक का lowest score क्या हो सकता है? And she still wins the medal. Okay guys, ये basic arithmetic वाला question हो गया. अब देखो, there are 3 judges, average 5.8 होना चाहिए. So 5.8 into 3. Can I say sum of all 3 scores should be 17.4? 5.8 into 3 किया है मैंने. बोलो विनायक. Yes, sir. Let's say first judge, the second judge gives X, this judge gives Y. So can I say X plus Y should be equal to 11.9? 17.4 minus 5.5? Yes, sir. Okay. अब इसमें से मुझे एक को मैक्सिमाइज करना है और एक को मिनिमाइज करना है, बिकॉज सम ऑफ 2 क्वांटिटीज में मुझे एक का मिनिमम निकालना है. सो व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर वन ऑफ देम कैन गिव? बोलो. 6. मैक्सिमम 6. So let's say X is 6 plus Y मिनिमम निकालना है हमको. This is 11.9. So Y मिनिमम पॉसिबल क्या है? 5.9. 5.9. इससे कम स्कोर नहीं चलेगा किसी का भी. Okay. Sir, I got till the X plus Y is equal to 11.9. Then I got confused as to how to get the minimum value. This is maths का rule. If sum of 2 quantities is fixed, ये fixed है मान लो. In this case 11.9. So if I maximize one quantity, तो जो B का वैल्यू आएगा वो उसका मिनिमम वैल्यू आएगा. Now ये मैक्सिमम अपने को पता है ये 6 ही हो सकता है. ये 6 फिक्स कर दो एंड फिर B को मिनिमम निकालो. देखो ये ना
ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो, जस्ट टू प्रूव माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 17 करो, प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 17। ये प्रैक्टिस हो जाएगा। This was the one I was seeing. It was weird. Sorry, Ishan? No, I was seeing this question after that. This was the one which was weird. हाँ, तो चलो let's solve the weird one now. ये दोनों SAT टाइप है। Let's solve this. 1 minute. What is the least value the store can receive from the 11th rating and still have an average of at least 85 points from first 20 ratings? Please do this. Absolutely correct. Very good. Very good, ma'am. Did you start with that thing? EBR और वो सब चालू किया है तुमने extra material से, मान? Sir, I had a look at it, but right now I'm preparing for IELTS also, so that's why I'm not but able बेटे, to. that material has been given to you precisely for this reason. जो तुम्हारी speed है और जो तुम्हारी accuracy है वो बहुत अच्छी है. You need that extra push to get to that good score. So don't leave it. उसको करना. Sure, sir. चिन्मय, correct. Very good. बहुत अच्छे. So I see, चिन्मय, की averages और ये वाला तुम्हारा strength है. You've got almost all problems right today. So this is your strength area. And the good news is कि इसमें से 3-4 problem, जैसा मैंने बोला था, around 5 to 6 problems आएंगे. तो अच्छा है, capitalize on it. निष्ठा, correct. Good. विनायक, देखो, तुम जो लास्ट प्रॉब्लम था उससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है, तुम इसको कर पा रहे हो क्या? 11th वाले पर्सन का रेटिंग मिनिमम पॉसिबल निकालना है, फर्स्ट 10 का रेटिंग फिक्स्ड है एंड 20 लोगों ने रेटिंग दिया है. इक्षा, ट्राई एंड रिलेट इट टू व्हाट वी जस्ट डिड विद दैट फिगर स्केटर वाला प्रॉब्लम. यू विल बी एबल टू क्रैक इट. करेक्ट ईशान. So this is not that weird. Yeah, some logic needs to be put. Good, Pari, correct. सिमर, जय, क्या कर रहे हो? जय, तुमने भेजा नहीं आंसर? Sir, sending 1 second. Sir, I had one question regarding those extra material. Will they be available afterwards as well? Like after October attempt, it'll be available. Yes, they will. Because I told you, right, I'm taking the December attempt instead of the October. They will be available. So I took a look at the maths ones. The maths ones were pretty. उसको डाउनलोड कर लो अपने हार्ड डिस्क पे, लोकल ड्राइव पे. Can't hear you, sir. Download them on your local drive. Can anybody hear, or is it just me? नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही है? Okay, that means it's just me. Hold on. Jay Vora, correct. Iksha, Simar, what happened? Vinayak, साथ में करें. Simar, you want me to do this? Yes, sir, please. ठीक है, मैं विनायक का वेट कर रहा हूँ. विनायक, बताओ क्या करना है? Yes, sir, solve it. So Vinayak, we do this time with you. I don't know if Iksha is there. I don't see her. But rest all those. Ishan? Yes, sir. Yeah, now I can hear you. चलो. Vinayak Patil, we start with you. इसको पहले read करो and then we do it together. An online store receives customer satisfaction ratings between 0 and 100 inclusive. In the first 10 ratings, the store received the average arithmetic mean of the rating was 75. What is the least value the store can receive for the 11th rating and still be able to have an average at least 85 for the first 20 ratings? ठीक है, विनायक, अब इसको करते हैं. Iksha, could you do this?
Sir, I tried, but I wasn't able to. So विनायक के साथ मैं कर रहा हूँ इसको. विनायक, so there are 20 ratings that would come. First 10 ratings का क्या बताया उन्होंने? Average is 75. Average is 75. So can I say the total from first 10 ratings is 750 points? Simar? अगर average Yes, first 10 का 75 है, तो total number of numbers into average will give me sum of numbers. Okay. 11th वाले का मुझे minimum point निकालना है. I don't know, but इसका minimum निकालना है. Such that overall average क्या चाहिए उनको guys? 85. 85 points. मतलब total sum कितना चाहिए ratings का? 850. बोलो. Yes. समझ Yes, में आया विनायक? Yes, sir. अब ये 1700 में से 750 पॉइंट्स तो आ गए. ये जो 11 से 20 वाले लोग हैं, आई नीड 950 पॉइंट. 950 नहीं, Yes, sir. Yes. Yes, sir. सही बोल रहा हूँ? Yes. 950. आई नीड 950 पॉइंट्स फ्रॉम देम. Yes, sir. ओके. ये 950 में 11th को मिनिमम देना है, तो मतलब बाकी सब अगर मैक्सिमम देंगे तो ही मैं 11th का मिनिमम निकाल सकता हूँ. लीस्ट पॉसिबल स्कोर दैट 11th वाला कैन गिव. तो 12 से लेके 20th मैक्सिमम पॉइंट क्या मिल सकते हैं मुझे? 900. 100 ईच इंटू 9. करेक्ट, 900. तो ये सब मुझे अगर 100 ईच देंगे फ्रॉम दीज 9 पीपल, आई गेट 900. तो बचा हुआ कितना पॉइंट है? 50. 11th को मिनिमम पॉइंट्स 50 देने रहेंगे. इससे कम में ये वाला टोटल नहीं आएगा, तो ये एवरेज नहीं आएगा. फिगर स्केटर ही तो है ये भी. ये आपका जज 1 है, ये आपका जज 3 है, ये आपका जज 2 है. Okay guys? Assumption. But So it's an assumption that the last 9 people give 100. Right. It's not assumption. It is the same arithmetic rule that if sum of two quantities is fixed and I am supposed to find the minimum of one of them, the other one should be maximized. Okay. चिन्मय, आपने कैसे किया इसको? So first I found the average for the second 10 days, means I subtracted them. 950, yes sir. Okay. 95. Then I multiply 9 into 100 and plus x is equal to 950. So you made an equation और फिर उसको वैसे solve किया. Yes. ठीक है. So I have only given you visualization. सिमर, विनायक, इक्षा, clear हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. Okay guys. Now I want you to solve. आपकी बुक में ही चलते जाओ. 17 तो हमने ऐसे ही कर लिया. This is a beautiful problem. Question number 12. 1, 2, 12. Sir, can you teach us the 18th one as well? That one I forgot completely how to do. ठीक है, मैं देता हूँ, मैं लूंगा. अभी 12 करो. I'll come to 18th. पहले 12 करो. This will really test your understanding. ये कुछ frequency से related है ये. Please do this. अरे चिन्मय, वापस करो.
अच्छा, ये सबका आंसर अलग अलग आ रहा है. I've got 3-4 people responding और सबका अलग ऑप्शन है. चिन्मय, दीक्षा, परी, सब अलग अलग. अच्छा ठीक है, तो देन आई थिंक ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें डिबेट होगा. जय वोरा. ओके, तो आप सर लोगों के ना 1 मिनट सर, मेरा आंसर नहीं है. हाँ हाँ ठीक है ना, भेजो. What I am saying is I am not telling you who is getting it right or wrong. पीछे गलत भी हो सकता है भाई, तो I don't know. पीछे कुछ भी होने तो आंसर की में हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे. And I would want to get into a discussion because I am getting different options. ठीक है. मान waiting for you. विनायक, निष्ठा धवन, मिस नायर. जय वोरा ने भेज दिया क्या? हाँ भेज दिया. ओके. Just a minute. हाँ, तो इसमें ना आई थिंक यू गाइस शुड लीड एंड डिबेट इट आउट, क्योंकि जिस तरह से आप लोग अलग अलग ऑप्शंस भेज रहे हो, मतलब इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाल लिए हैं आप लोगों ने. एंड द टफ फाइट इज बिटवीन बी वर्सेस सी वर्सेस ए. Sir, in this question, do we have to use that empirical relationship? You don't have to use anything other than your brain. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एक टेबल दिया है, एक नया बच्चा आता है जिसका कुछ स्कोर है, तो क्या मीडियन चेंज हो जाएगा तो वो मीडियन क्या है? That's all. मैं बताऊं सर? नहीं अभी नहीं, रुको. ओके. सो मैं ना ये क्वेश्चन को स्क्रीन पे लेके आता हूँ so that we discuss this together. And because Ishan wants to take this lead, so first tell me, Ishan, which option are you defending? A, B, C, D? I am defending C. C. Hold on then. Pari Kulkarni, which option, madam, from your side? C. C. नहीं, कोई B वाला नहीं है. B वाले थे, आप लोगों ने भेजा तो था मुझे. चिन्मय अग्रवाल, B. हाँ, तो अब आएगा मजा. चलो भैया. So we start with B first. Chinmay, tell us how you have done this. So we will calculate the sum of the frequency and we will add one because Sam is taking on Tuesday. So Okay, so how many students are there currently? 60. So मुझे निकालना क्या है? What am I supposed to find? Median. Median. I just lost my pen. Hold on. Median निकालना है. 16 students का अगर median निकालना है, तो जो 8th position पे बच्चा है and 9th position पे जो बच्चा है, इनके score का sum and then average divide by 2 rather. So वो मुझे मिल जाएगा median score, right? Yes, sir. Is this data already arranged? Yes, sir, but we will. It is already arranged. Descending order में arranged है data. Just make it into ascending order. Makes it easy. नहीं क्यों? क्या जरूरत है? इसी order में It's arrange the same thing. It's the same thing, but I mean like usually from traditionally time SAT में time waste नहीं करना है. आगे चलते हैं. Yeah, So we this do. is my value 1. Yes, sir. यहाँ पे पहला बच्चा चिन्मय, ये 3 हो गए. Yes, sir. 7 हो गए. Yes, sir. ये मेरा 8वां बच्चा है, राइट? और यहाँ पे मेरा 9th बच्चा आएगा. 85 और 80, 82.5 इसका मीडियन है. बट ये निकाल के कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज देयर इज अ न्यू स्टूडेंट हु कम्स इन विद अ स्कोर ऑफ 95. जो 95 वाला बच्चा आएगा वो यहाँ पे आएगा चिन्मय. Yes, sir. टोटल बच्चे कितने हो गए अब? भी 17. 17. कौन से वैल्यू पे मीडियन मिलेगा गाइस? n+1/2h. 9. Number of students will be 9th वैल्यू पे मीडियन मिलेगा. तो जो परी आपने मुझे बताया था जब मैंने मीडियन का पूछा था, तो आपने मुझे उसमें ऑड अज्यूम करके वो फॉर्मूला बताया था शायद, है ना, कि अगर वैल्यूज ऑड हैं तो 9/2 + 1th वैल्यू. No sir, I think I said that when I wasn't audible. वो फिर मैंने headphones निकाले. ठीक है, ठीक है. तो अब 9th पे मिलेगा. हाँ Sir, what I did is I basically listed all the values like 60, 70, 70. I just went on till the end. कंप्लीट तो करने दो हमको, ये हम कंप्लीट कर देते हैं फिर तुम बोलना. Okay. अभी मैं चिन्मय के साथ कर रहा हूँ. चिन्मय ये ठीक है 9th पे मिलेगा? Sir, it will be total 16 students only because Sam was absent. He is not added. अच्छा ओके, एक मिनट. अब रुको, इसका ये ना, ये तो ये एक प्रिंसिपल डाउट खड़ा कर दिया इस बच्चे ने. देखो इधर,
इनको ऐड करो जरा, अग्रवाल जी इनको ऐड करो, ये 17 होना चाहिए बाय योर लॉजिक, ऐड करो इनको। Sir, just a 1 minute. plus 2 3, 3 plus 4 7 plus 1 8 plus 3 11 plus 2 13 plus 2 15 plus 1 16 आ रहा है सर उसका सम। सैम ये इसमें नहीं है चिन्मय, Okay, sir. because people who wrote test were 16. Sam was absent. People who wrote this test, the score of today's history test for 16 students are shown in. ये है, और सैम उस दिन आया नहीं तो उसका स्कोर है ही नहीं इसमें, ये किसी को 0 मिला है, एब्सेंट तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो आपका वो अजम्पशन वैलिड हो सकता है, बट देन यू विल चेक एंड यू विल से नहीं मुझे मेरा अजम्पशन चेंज करना पड़ेगा। तो जो सैम आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो जब सैम यहाँ पे आएगा तो एक बच्चा यहाँ पे हुआ, प्लस 3 4 बच्चे यहाँ पे हुए, प्लस 4 8 बच्चे यहाँ पे हो गए। 8 बच्चे अगर यहाँ पे हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि 9th वाला बच्चा ये है। Median score of the class will be 85. Okay, sir. This is the right answer. Okay, sir. Iksha, Sir, Vinayak, बताओ। I took it with the whole list. Yes, sir, got it. But that's not required. ये कितना फास्ट हो गया, 16 बच्चों का दिया है, ऑलरेडी अरेंज है, मुझे कुछ नहीं करना। 17 बच्चा आएगा 95, मतलब ये बन गया 3, 2 को कंसीडर मत करो। 17 बच्चे हैं तो 9th वाला बच्चा मुझे मीडियन देगा, ये हो गया 1 plus 3 Oh, हाँ, 4 okay. plus 8, और 9th वाला बच्चा ये रहा, इसका स्कोर ये रहा, तो ये हो गया मीडियन ऑफ द न्यू ग्रुप। खत्म। Sir, बोलो। either ways, like I went in ascending order, either ways 85 ही आएगा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तो वो मेहनत क्यों करना है, क्योंकि डेटा अरेंज्ड होना चाहिए। मेरे डेफिनेशन में मैंने ये नहीं बोला उसको असेंडिंग करो या डिसेंडिंग करो, किसी एक ऑर्डर में अरेंज कर दो, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। यहाँ तो टाइम बचाओ ना, टाइम आगे लगेगा आप लोगों को, जब सर्वे के क्वेश्चंस करोगे, पैराबोला वाले क्वेश्चंस करोगे, वहां लगेगा समय। चलो अब आगे बढ़ते हैं। So by this logic, now I want you to solve. I think I'll do only one more problem, फिर हम लोग बॉक्स विस्कर प्लॉट पे जा सकते हैं। कौन सा अच्छा क्वेश्चन है ये, एक ये भी बोल रहा था ना, 18. सैट प्रॉब्लम 1, मैं आता हूँ 18 पे। सैट चैलेंज प्रॉब्लम 1 करो। एक्सीलेंट क्वेश्चन, दिस इज रियल एसएटी प्रॉब्लम और सैंपल पेपर का प्रॉब्लम है, बट कॉलेज बोर्ड का ही है। Sir, can you show the question? क्वेश्चन क्यों Sir, बुक I have नहीं है? the old book. हाँ बेटे एक मिनट रुको, आई विल जस्ट शेयर विथ यू। मुझे सैट चैलेंज प्रॉब्लम 1, ये वो है ना, नंबर ऑफ टेलीफोन लाइंस का है क्या क्वेश्चन गाइस? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हियर इज दिस, ये जय वोरा फॉर यू, ये रहा क्वेश्चन। What is the median number of telephone lines in thousands? Let me see who does this right. ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, ठीक से समझना पहले उसको। Oh, I have an answer. Who's this? Very good. Very good. निश्नायर आपने एकदम सही किया। Very good चिन्मय। नाइस। अगर ये राइट आ रहा है मतलब मीडियन का फंडा तो क्लियर हो गया आप लोगों का। राइट, गुड गुड गुड। बोथ ऑफ यू गेट 1 point. Correct, Isham. Very good. Yes, Pari. Correct. Wow. I'm तो अच्छा है। confused in this question. ठीक है, we will do it this together. अच्छा एक बात, ये ग्रिड इन क्वेश्चन है, हाँ इसमें ऑप्शन नहीं है, ये ग्रिड इन क्वेश्चन है, ये एसएटी का क्वेश्चन है, ग्रिड इन में आपको ग्रिड में आंसर बढ़ना है। ठीक है, सो मान इज कंफ्यूज, बाकी सिमर, जय, निष्ठा, विनायक को क्या हुआ है आज?
लंच नहीं किया है तुमने आज? यू आर वेरी सबड्यूड. नो सर. नो सर मतलब लंच नहीं किया है कि सबड्यूड नहीं हो? नहीं सर, किया है लंच सर. अच्छा, करेक्ट निष्ठा, गुड. चलो विनायक एंड यस जय वोरा, करेक्ट. तो मान वी स्टार्ट विथ यू. मुझे सबसे पहले बताओ क्या कंफ्यूजिंग है इस डेटा सेट में? हैव यू अंडरस्टूड द डेटा सेट? लेट मी टेस्ट. व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? मान विनायक, ये जो डॉट को मैंने बोला किया है, इसका इंटरप्रिटेशन दो. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 countries had 250,000 telephone lines. Okay, so there are 5 countries, rather 5 नहीं, ये रुको, ये ऐसे नहीं है. How many countries are there? Can you guys tell me how many countries are there? 16. 16. नहीं, 16 countries नहीं है. Sir, 28. 16 plus 5 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1. क्या आ रहा है ये फिगर? 28. 28 कंट्रीज का डेटा है ये. 28 कंट्रीज का टेलीफोन लाइन है. और ये जो डॉट आप देख रहे हो, ये डॉट ये बता रहा है कि दिस पर्टिकुलर कंट्री हैज 250,000 telephone lines and there are 16 countries which have 0,000 telephone lines. There are 5 countries which have 250,000 telephone lines. There is one country which has 500,000 telephone lines. ऐसे ही 2 countries हैं जिनका 1,000 which is like 1,000 6 0 हो गए क्या? a million telephone lines है इनका. इसका ये मतलब है अगर 28 कंट्रीज है और मुझे मीडियन, तो क्या ये डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है? यस, ये डेटा अरेंज्ड है ऑलरेडी. 0 टेलीफोन लाइन से लेके 2 मिलियन टेलीफोन लाइंस तक में ये डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है. आई नीड नॉट डू एनीथिंग. 28 कंट्रीज, बताओ कहां पे आएगा मीडियन? 28 will be 14th observation and 15th observation. का एवरेज 14th ऑब्जर्वेशन एंड 15th ऑब्जर्वेशन का एवरेज. Yeah, and we know that 14th ऑब्जर्वेशन और 15th ऑब्जर्वेशन. कितनी टेलीफोन लाइंस है जो कंट्री 14th ऑब्जर्वेशन पे है? मान 0. 15th 0. 0 और 0 का एवरेज 0. So answer is 0. आंसर इज 0. है ना सर हम लोग विनायक? थोड़ा वो बॉक्स विस्कर करें क्या? हाँ सर. नहीं करें. अभी जो मैं करा रहा हूँ वो करें. खत्म हुआ ये ना? आ गया समझ में? Yes, sir. सिमर, ईशान, तुम इतना तेज जा रहे हो. देखो मुझे ये दोनों लड़के, इनका चेहरा देख के यही लग रहा है कि ये क्या चल रहा है. सिमर बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? विनायक और ये दोनों बहुत डल दिख रहे हैं मुझे. हाँ सर, समझा सर. तो ये है मीन मीडियन मोड और ये थोड़ा सा इजी वाला पार्ट है. बट इसका एप्लीकेशन, क्योंकि सैट इंटेलिजेंट एग्जाम है दैट वेज, उन्होंने इसको बहुत ट्रिकी बना दिया है. अभी ये ना, ये बहुत जल्दबाजी में रहता है ईशान, इसलिए अभी हम इसके साथ नहीं करते हैं बिकॉज एसएटी में ना एट टाइम स्पीड किल्स. तो अभी रुको, अभी आई वांट यू टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कीजिए. ये अगर आप लोग सबने राइट किया तो मैं बॉक्स एंड विस्कर पर चला जाऊंगा. चलो, और एक का भी अगर रॉन्ग हुआ तो वी डू मोर प्रॉब्लम्स ऑन मीन मीडियन मोड. क्वेश्चन नंबर 13. और अगर ईशान ये तुम्हारा रॉन्ग हुआ तो बाकी सब बॉक्स एंड विस्कर करेंगे. तुम इसमें अभी 5-6 प्रॉब्लम सॉल्व करो. चलो करो. करेक्ट चिन्मय, वेरी गुड. Sir, nothing to बहुत lose, अच्छे. everything to gain only, sir. वेरी गुड चिन्मय, अच्छा क्वेश्चन था ये भी. ये एक्सेप्ट कैन नॉट बी वैसा वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना प्लीज. विनायक करेक्ट, मान करेक्ट, वेरी गुड. अब तो करना ही पड़ेगा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. जय वोरा करेक्ट.
Nishtha, correct. Now everything depends on Iksha and Pari and Simar and Ishan, of course. But for all casualties, only Ishan is responsible. I am not. Correct, Pari. Iksha and Simar, मैं फालतू का प्रेशर ऐड कर रहा हूं तुम लोगों पे. आराम से करो. Data वाले questions में on a serious note, you must take time, realize, read, understand, and then solve. Ishan, correct. Who's left? मान, आपका भी आंसर नहीं आया ना अभी? आ गया है, अच्छा. Okay. चलो सिमर. Question number 13. Iksha, correct. Simar, you want me to do this? साथ में करें इसको हम लोग? बोलो सिमर. हो गया. हाँ तो अनाउंस कर देना तुम अपना ऑप्शन. रेस्ट आई हैव गॉट ऑल आंसर्स. अच्छा चलो बाकी लोग बैठे हुए हैं तो ऑल दोज हु हैव डन दिस आई वांट यू टू डू. कौन सा किया आप लोगों ने वैसे? 13th. 13. इन द मीन टाइम व्हेन ही इज डूइंग 13th, सिमर आप लोग को 14th करना है. 14. अनदर जेम ऑफ अ प्रॉब्लम. 14th. 1-4. दोनों में 1-1 मिनट का टाइम है. 13th and 14th should be done in 1 minute each, not more than that. Especially 14th. Calculator allowed. Simar, bolo bete, 13th, what happened? You need help? Sir, D is 42. Is correct, but तुमको समझ में आ गया है ना? हाँ सर, वो मैंने मीडियम की जगह मीन निकाल रहा था तो सब गलत हो गया. 13th करो. हाँ 13th नहीं, सॉरी 14th करो. सिबलिंग वाला क्वेश्चन करना है आपको. लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम मीन मीडियन मोड. Very good. Very good, Ishan. This is like, I would say, pinnacle of concept testing with respect to SAP. और अच्छे से किया तुमने. निष्ठा, very good. Correct, मान. बहुत अच्छे. So Nishtha, now you are ready for October attempt. हाँ और तुमने रजिस्टर भी कर लिया है. गुड परी, वेरी गुड. जय बोरा, करेक्ट. चलो भाई, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना अच्छा रिस्पॉन्स. यू गाइज आर डूइंग इट वेल नाउ. गुड. यस, गुड मिस नायर. So I'm waiting for Chinmay, Vinayak, Simar. Chinmay, correct. तुमने पहले भेज दिया था चिन्मय? Maybe I missed it then. Yes. Very good. Vinayak, Simar. Is there anybody else जिसको मैं भूल रहा हूँ? ठीक है.
मुझे बोलना अगर मुझे करना है तो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है ये। Vinayak, let's do this together. हाँ Okay, sir. चलो सिमर, ये मैं यहीं पे करता हूँ। Have a look. So विनायक, read it out. भले ही स्क्रीन से पढ़ लो, जैसे भी करना है करो। The table above shows how many students in a class of 12 preschoolers had 0, 1, 2, or 3 siblings. Later, a new student joined the class, and the average arithmetic mean number of siblings per student became equal to the median number of siblings per student. How many siblings did the new student have? Okay. So there are 12 students right now. Okay, विनायक, Yes, अब sir. इनका एवरेज निकालते हैं, नंबर ऑफ सिबलिंग्स का एवरेज निकालते हैं। 3 स्टूडेंट्स विद 0 सिबलिंग्स, तो कितने सिबलिंग हुए? 0। 6 स्टूडेंट्स विद 1 सिबलिंग, तो टोटल 6 सिबलिंग्स। 2 स्टूडेंट्स विद 2 सिबलिंग्स ईच, 4 सिबलिंग्स। 1 स्टूडेंट विद 3 सिबलिंग्स, 3 सिबलिंग टोटल। So 6 plus 4 plus 0 plus 3. Can I say there are 13 siblings 13. in total? Yes, sir. अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा बाय 12, आई विल गेट ओल्ड 7. मीन। नया बच्चा आया नहीं है, ये ओल्ड मीन हो गया। 13 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग सिबलिंग पर हेड हो गया एवरेज। नाउ दे से देयर इज अ न्यू बच्चा हु कम्स इन। मुझे नहीं पता वो कितना सिबलिंग है उसके, बट देयर इज अ न्यू बच्चा हु कम्स इन, एंड जो ओल्ड मीन था, मैं इसको एम लिख देता हूँ, अर्थमेटिक मीन। जो अर्थमेटिक मीन है, अब एक नया बच्चा आने से अर्थमेटिक मीन बिकम्स इक्वल टू मीडियन। कौन सा अर्थमेटिक मीन? द न्यू अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स फर्स्ट फाइंड, जो वो नया बच्चा आएगा 13 हो जाएंगे। अगर 13 बच्चे हो गए, तो मुझे मीडियन कहां पे मिलेगा? विच वैल्यू विल गिव मी मीडियन? 7th वैल्यू विल गिव मी मीडियन। 7th वाला बच्चा, दिस इज ऑलरेडी अरेंज्ड 0 से लेके 3 सिबलिंग में, तो 7th वाला बच्चा कहां मिलेगा? 3 बच्चे यहाँ मिलेंगे, और उसके बाद 9 बच्चे यहाँ होंगे। अब वो बच्चे को कहीं पर भी आने दो, हमेशा 7th वाला बच्चा तो यही रहने वाला है। 7th वाले बच्चे का तो 1 ही सिबलिंग होगा। वो इससे ऊपर आएगा तो भी, इससे नीचे आएगा तो भी, और यहाँ पर आएगा तो भी, कुछ भी हो, 7th वाले बच्चे का तो 1 सिबलिंग ही होगा। बोलो बोथ ऑफ यू, डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो मतलब नया वाला मीडियन किसके बराबर है? 1 के बराबर है, और नया वाला मीन भी 1 है। दे से मीन 1 है। नया वाला मीन 1 तब होगा अब अगर आप इसमें +1, एक बच्चा और आएगा, और अगर टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स नहीं बढ़ेंगे तभी जाके अर्थमेटिक मीन 1 होगा। तो इसका मतलब जो नया बच्चा आ रहा है उसके कितने सिबलिंग्स हैं? 0। तभी वो टोटल को नहीं बढ़ा रहा है। आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर ए। राइट हो गाइस? नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर डूइंग इज, ये मैं आप लोगों को समय नहीं दे रहा हूं, आपको विल क्रिएट छोटा सा फिश मार्केट जैसा हो जाएगा, बट मुझे चलेगा। आई वांट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम and announce your answers. Question number 25. Done. From your book or from the screen. ये मैंने 25 यहाँ पे भी डाला है। सर अनाउंस करना है कि चैट? हाँ अनाउंस करना है जी। Okay, let's see. Correct, Isha. Please announce. आपको बताना है इसमें, देखो इतना समय क्यों लग रहा है। In the figure above, what is the median of the slope of OB, OA, OB, OC, OD, OE? So Pari, we do this with you. Are these lines already arranged in some order? OA, OB, OC, OD, OE? Yes, they are. Yes.
तो जो मिडिल वाला लाइन है वो आपको मीडियन देगा, मतलब ओसी वाली जो लाइन है वो आपको मीडियन देगी। Yes. बस उसका स्लोप देख लो, तो उसका स्लोप होगा y2 minus y1. y2 is 3, y1 is 0 upon x2 minus x1. 4 x2 is 4, x1 is 0. 0. Yes. 3 by 4. Answer is 3 by 4. बीच वाले लाइन का स्लोप इज योर मीडियन बिकॉज यू ऑलरेडी अरेंज्ड इन लाइंस, है कि नहीं? Yes, sir. सो आई हैव नॉट गिवन यू ब्रेक, आप लोगों को मुझे 3 बजे एक ब्रेक देना था. सो should we go for break and do box and whisker plot then? Yeah, you guys don't need break and you want me to continue? So you I can guess- continue. Anything. नहीं, ब्रेक लेते हैं. Let's take a छोटा सा break. So this is 3:34 by my watch. 3:39 पे we resume. Okay, sir. Thank you. Sir, question. How from the other students? Okay guys, Excuse me, sir. चलो चालू करते हैं and we go ahead. We solve some box and whisker plot problems. Like I said, fairly inconsistent है वो. It appears sometimes and absent other times. So, but we have to be prepared. तो कुछ questions कर लेते हैं. The questions that I have with me, they come from Khan Academy level 4 या फिर SAT के questions हैं. So I want you to first come down to question number 35. Please come down to question number 35. Read, understand, and then give your response. 45 seconds. Correct, Ishan. Yes, correct, Chinmay. Good. Correct. Jayavora, Vinayak, correct. Yes, correct, Nishta. Man, correct. Simar, Iksha, correct. Excuse me, sir. Yes, Chinmay. Sir, can this box whisker graph be related with standard deviation? Standard deviation. Yes, sir. अभी आंसर करते हैं इसको. अभी देखना वो बॉक्स को ही देख के आंसर करेंगे इसको. Simar, yes, okay. Pari, okay. So all of you have got this right. Answer is option D. So they are asking you 25% से ज़्यादा कौन से कितने लोग, and then you are finding that out. Q3 का value पूछा है basically उन्होंने. Now there is a question in class which is around finding standard deviation for a given data from box and whisker plot. Is that your question, Chinmay? Sir, I'm asking, can it be interpreted or means an assumption can be made from this? If you get two box and whisker plot, if there are two, let's say two such box and whisker plot, and if you have to compare them and find कि standard deviation किसमें ज्यादा होगा कम होगा, ऐसा पूछ रहे हो तुम मुझसे? Yes, sir. Okay. So देखो box and whisker plot में एक पर्टिकुलर डेटा जो नहीं होता है, जो भी हमने आंसर किया था, they don't talk about individual values, right? And they don't talk about mean of those values. Yes, sir. Standard deviation में अगर individual values नहीं है तो मुझे spread नहीं पता है डेटा का, मुझे spread नहीं पता कि वो कितना densely packed है या कितना spreaded है. I know कि वो 25% के क्लस्टर में है, but उस 25% में वो packed कैसे है? जैसे वो विनायक पाटिल के फार्म का एग्जांपल लेते हैं, मैं वापस आता हूँ उस पे. Let me make this a spotlight. Now the problem with what you have asked me, the problem with box and whisker plot is I really don't know the individual values, how many watermelons and where they are spread, वो कहाँ पे है.
Yes. मीन क्या है, उस डेटा का वो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, I don't know all that, and I don't know इसके around. I mean, are there more values here, or there are more values here, or there are more values here? मुझे नहीं पता. Yes. तो इसलिए चिन्मय मैं दो बॉक्स विस्कर प्लॉट को देख के स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में कमेंट नहीं कर सकता. Okay. बट अगर आपने मुझे इसके साथ डॉट प्लॉट दिया, डॉट प्लॉट अगर मुझे इसके साथ दिया, then I can comment and compare. I may not be able to find, but I can compare two dot plots in Whisker box and Whisker plot, and then I may be able to comment, but not with the two box Whisker plot only. समझ में आ गया? Yes. मतलब इसका मान लो विनायक पाटिल के पास दो फार्म है, एक पुणे में था और दूसरा उसके पास पनवेल में, और दोनों का बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट दिया है. क्या मैं वेट और वाटरमेलन के स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में कमेंट कर सकता हूँ? नहीं. बट अगर दो डॉट प्लॉट्स हैं इसके दो फार्म के, आई कैन डू दैट. ठीक है? Yes. क्योंकि मुझे स्प्रेड ऑफ डेटा नहीं पता, क्रॉस मीन मुझे नहीं पता. क्वेश्चन नंबर 37 गाइस. Yes, correct. So, Sir. Jay, Pura, Ishan, correct. Yeah. Sir, I had one doubt in one question which was there in the 8th question of the classwork, right? So could you just check the answer whether it's correct or not, because I feel it's do that problem right now. Hold on, abhi karte hain. okay. I don't have that question with me. You will have to help me with that problem, and then we'll do it right now. Correct, guys. Pari, Chinmay, correct. Very good. Simar, correct. So dot plot on left shows number of songs on each album in Sal's collection. Each dot represents a different album. Left bottom is 5 number. Box Whisker plot का ये दूसरा नाम है. 5 number summary for this data. According to 1.5 IQR rule for outlier, how many high outliers are there in the data set? So Q3 मुझे मालूम है 13, Q1 मुझे मालूम है 9, Q3 minus Q9, Q3 minus Q1, 13 minus 9, 4, 1.5 times of that, 6. Now I want higher end pay. So Q3 plus 1.5 IQR, which is 13 plus 6, is 19. There is only one album with 20 songs. So there is one outlier in the data set. Answer is option B. बोलो ये समझ में आ गया? ठीक है, मुझे क्वेश्चन 8 के लिए थोड़ा सा टाइम दो. I would want to finish this survey वाला part. How much time do I have? I have 14 plus 5, 19 minutes है मेरे पास. So guys, we come down to another concept of surveys. In an ideal case, there is one problem coming from the concept that we are doing this. We are very lucky. At times, we have also seen 2 problems coming from the concept that we are doing right now. तो पहले मैं इसके कुछ बेसिक चीजों को आपके साथ शेयर करता हूँ, and only as much required for cracking SAT problem. So we are doing this concept called surveys. Surveys or survey ही बोलते हैं, I think इसका plural भी यही होगा. So we are doing survey based problems. Before we do this, let me tell you, there are 3 kinds of research or survey that are possible, that generally people would do. One is जो आपको पता है, which is which is those field based surveys. जहाँ पे there is a questionnaire. There is somebody who would be called as a researcher who would come to you. You become responder in your presence by asking you or administrating a questionnaire. They get it filled and फिर वो जाके वो डेटा को एनालाइज करते हैं. दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन. Under observation kind of survey, respondent may or may not know that they are being observed. तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके कोने पे जाके कॉर्नर सीट पे there is a researcher who sits down and he makes his note by observing the behavior, facial expressions, movement around the store of the customers.
the researcher finds out कि वो जो रिस्पोंडेंट है वो कौन से प्रोडक्ट को पहले उठा रहा है, सबसे पहले क्या वो प्राइस देख रहा है, बॉटम देख रहा है, वे कर रहा है उसको. सो द रिस्पोंडेंट मे नॉट नो कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है. जैसे आपने कुछ वो हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी वेयर यू नो इनसाइड द पुलिस स्टेशन एक ऐसा मिरर लगा रहता है विच इज वन वे. On the one side there is this person who is accused and he's sitting and there is an interrogation going on. दूसरे साइड ग्लास पे वो ऑफिसर्स खड़े होते हैं और वो उसको देख रहे होते हैं. उसको ऐसा लगता है वहां पे मिरर लगा है, जबकि दूसरे साइड वालों को वो सी थ्रू होता है. दे कुड सी कि उस रूम में वो कैसे बिहेव कर रहा है. दैट्स एन ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ स्टडी. द थर्ड इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. ये मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ. एक्सपेरिमेंटेशन. Now under this what happens, you create two groups. कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे, कॉम्प्लान नहीं पीने वाले बच्चे, कोलगेट करने वाले लोग, कोलगेट नहीं करने वाले लोग, या फिर एसएटी ट्रेनिंग लेने वाले लोग एंड नो एसएटी ट्रेनिंग लेने वाले लोग. तो मैं दो ग्रुप बनाता हूं. एक ग्रुप मेरा नेचुरल ग्रुप होता है जिसमें कोई इंटरवेंशन नहीं दिया एक्सटर्नल. इनको कॉम्प्लान नहीं पिलाया, इनको कोलगेट टूथपेस्ट नहीं किया, इनको एसएटी ट्रेनिंग नहीं दी. This group is called as, ये दो ग्रुप है आपके. ये ग्रुप अभी मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं. एंड दी अदर ग्रुप जिसको आपने इंटरवेंशन दिया, उनको कॉम्प्लान पिलाया, उनको कोलगेट टूथपेस्ट किया, उन्होंने क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाया, उनको आपने एसएटी ट्रेनिंग दिया. तो एक बहुत बड़ा होमोजीनियस ग्रुप है. रैंडमली उस ग्रुप को दो में स्प्लिट किया. एक पे इंटरवेंशन लगाया, एक्सटर्नल एसएटी ट्रेनिंग दिया, एक पे कोई इंटरवेंशन नहीं लगाया. जिसपे आपने इंटरवेंशन नहीं लगाया, दैट ग्रुप इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप. इसको आपने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया. दिस इज योर कंट्रोल ग्रुप ऑन विच यू हैव नॉट अप्लाइड एनी ऑफ योर इंटरवेंशन. द अदर ग्रुप जिसपे आपने इंटरवेंशन किया, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट वाला, जिसपे आपने इंटरवेंशन लगाया. ये आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप है. एंड देन यू डू स्टडी. एंड वो स्टडी करके आपने पता किया कि जिन लोगों को एसएटी ट्रेनिंग दिया गया, दे स्कोर्ड 100 पॉइंट्स. जिन लोगों ने कॉम्प्लान पिया, उनकी हाइट 3 इंच ज्यादा बढ़ गई. जिन्होंने वैक्सीन लिया, वो 97% कम बीमार पड़े. जिन्होंने डेटॉल यूज किया, उनके घर में ये एक्सपेरिमेंट. दिस काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन. कंट्रोल ग्रुप, नो इंटरवेंशन अप्लाइड. इंटरवेंशन अप्लाइड, एक्सपेरिमेंट ग्रुप. बोलिए, समझ में आया? सो एसएटी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि फील्ड बेस्ड हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हो सकती हैं, या रैंडमली एक होमोजीनियस ग्रुप में रैंडम सैम्पलिंग करके, बिकॉज ये एक कॉमन ग्रुप होना चाहिए. तो रिलायंस फाउंडेशन स्कूल के 11th में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 50 को एसएटी ट्रेनिंग नहीं दी, 50 को एसएटी ट्रेनिंग दी. स्टडी किया एंड फाइंड किया जिनको एसएटी ट्रेनिंग मिला, 100 पॉइंट से ज्यादा स्कोर आया. दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. बोलो, ये समझ में आ गया? तो ये 3 तरह का स्टडी आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट मी गो टू इन डेप्थ थोड़ा सा अबाउट सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स. सो गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, तो मैं कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाता हूँ. लेट्स से दिस इज सम आइलैंड. आई डोंट नो, दिस इज सम आइलैंड एंड द नेम ऑफ दिस आइलैंड इज नो नेम. ये नो नेम आइलैंड है. ओके. एंड आई नो फ्रॉम मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल काउंसिल ऑफ नो नेम, उन्होंने बताया कि इस आइलैंड में देयर आर 1 लाख डॉक्टर्स. यहाँ पे 1 लाख डॉक्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन. एवरीथिंग इन दैट यूनिवर्स. सो माय यूनिवर्स इज नो नेम आइलैंड. उसमें जितने डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स का जो नंबर है वो पॉपुलेशन साइज हो गया. पॉपुलेशन साइज इज 1 लाख. नाउ लेट्स से देयर इज अ रिसर्चर सिमर. ही सेज मैं यहाँ पे स्टडी करने जा रहा हूँ. I'm going to find out what is the average fee charged by these doctors when a patient visits them for first time. जब वो first time इनको visit करता है, तो what is the average fee that they charge? This is called as parameter under study. ये वो sample parameter है, या भी उसको parameter समझो, parameter under study. Now Simmer says, I cannot go to 1 lakh doctors, it will waste my time and it will require a lot of money. I don't have so much resource. So Simmer bolta hai that what I will do is I'll create a sample and I will
study only, let's say वो कुछ भी करता है, I'll study 200 doctors out of 1 lakh doctors and I'll do a random sampling. Randomly मैं 200 डॉक्टर को स्टडी करूंगा. This is called as sample size. तो ये पॉपुलेशन होता है, ये होता है सैंपल साइज. और जो आप स्टडी करने वाले हो, दिस इज कॉल्ड एज सैंपल पैरामीटर. व्हाट आर यू स्टडीइंग? आई एम स्टडीइंग दिस पैरामीटर, एवरेज फी चार्ज बाय डॉक्टर्स फर्स्ट टाइम. सो बेसिकली एवरेज फी, दिस इज माय सैंपल पैरामीटर. ये हो गया सैंपल साइज. बोलो ये सब समझ में आया आपको? ओके, लेट्स से ही डज दिस स्टडी एंड ही सेज मैंने स्टडी किया, वहां पे करेंसी रुपी चलता है, लेट्स से, and he says मैंने पता कर लिया the average fee charged by doctor as per my study is ₹500. ओके, तो ये आप इसको आप बोलेंगे, ये आपने निकाल लिया सैंपल मीन. आपने सैंपल मीन निकाला कि 1500 रुपए इज द एवरेज फर्स्ट टाइम फी चार्ज बाय डॉक्टर्स ऑफ नो नेम. ओके, दिस इज द क्लेम ही इज मेकिंग in his report. But then there is another researcher, let's say Pari, who says, are you very sure? अगर मैं भी ये स्टडी करूं and I also select randomly 200 डॉक्टर्स, और जरूरी नहीं है सब आपके डॉक्टर्स हों, कुछ दूसरे होंगे, कुछ वही होंगे, I will get 1500 rupees. So सिमर को समझ में आया that okay, कुछ गड़बड़ है. तो सिमर ने बोला अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को रिवाइज किया, and he says the sample mean of my study is ₹1500 with plus minus 200 rupees, with plus minus 200 rupees. This is called as margin of error. Margin of error, इसको margin of error बोलते हैं guys. तो अब सिमर की स्टडी में क्या हो गया? सिमर सेड the fees, average fees for no name island is between 1300 rupees to 1700 rupees. My sample mean is this. इसमें प्लस माइनस मैंने मार्जिन ऑफ एरर किया, तो मेरा एवरेज फीस इज बिटवीन, फॉर माय सैंपल that I am concluding to say is this. This thing is called as, this thing मैं सब ब्राउन से लिख रहा हूँ, हाँ, बट इसको मैं ग्रीन से लिखता हूँ. This thing is called as confidence interval. क्योंकि परी ने उसको चैलेंज किया था तो उसका कॉन्फिडेंस हिल गया, उसने मार्जिन ऑफ एरर निकाला अपने सैंपल में और उसने एक रेंज निकाल दिया इस डेटा का. ये जो रेंज निकाला, दिस थिंग इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस इंटरवल. अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है, तो आई मीन परी चैलेंजेस अगेन एंड शी सेज, अच्छा अगर मैंने यहाँ पे 200 लोग, कोई और 200 लोग लिए और स्टडी किया, तो माय मीन विल आल्सो लाई बिटवीन दिस रेंज. सिमर सेज यस. He says, if you do another study in the same population with the same sample size, doing it randomly, not necessarily the same sample, but with the same sample size, studying the same sample parameter or sample mean, I can say that 95% times आपका sample mean इसके बीच में ही आएगा, 1300 to 1700. This thing is called as confidence level. अब इसको एब्जॉर्ब कर लो प्लीज. ये जो आपको दिख रहा है, पॉपुलेशन क्या होता है? सैंपल साइज, सैंपल पैरामीटर, वो वेरिएबल जो आप स्टडी करते हो, सैंपल मीन, वो सैंपल का मीन जो आपने निकाला, उसमें एक मार्जिन ऑफ एरर लाते हो. मार्जिन ऑफ एरर क्यों? हो सकता है डॉक्टर्स ने गलत कोड किया हो सकता है मैं सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल पाया, हो सकता है मैं ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल ही नहीं पाया जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, हो सकता है मेरा कन्वीनियंस था, हो सकता है गणपति फेस्टिवल चल रहा था. देयर वर लॉट ऑफ बायसेस दैट मे कम इन. कुछ एक्सटर्नल एरर आ सकते हैं, तो एक मार्जिन ऑफ एरर बिल्ड किया रिसर्चर ने एक इंटरवल दिया कि इस अगर आप तुम स्टडी करोगे तुम्हारा मीन इसके बीच में आना चाहिए. बट रिसर्चर 100% श्योर नहीं है, तो रिसर्चर ने बोला मैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे बोलता हूँ that if any other study is done for studying the same parameter,
in this population with the same sample size, mean would be in this confidence interval. अब मुझसे पूछो क्या समझ में नहीं आया, पहले इसको पूरा absorb करो, let this sink in, and then we will do some problems based on this. So, sir, how will we take out the margin of error? So margin of error statistically, अच्छा SAT का ये स्कोप नहीं है, they will never ask you to find, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन वो कभी ढूंढने को नहीं बोलते हैं, तो मार्जिन ऑफ एरर वो निकालने को नहीं बोलते हैं, बट मार्जिन ऑफ एरर स्टैटिस्टिक्स में आप निकाल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने जो डेटा कलेक्ट किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होता है, बेल कर्व पता है क्या होता है? यस सर. तो मान लो आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो डेटा का बेल कर्व कुछ ऐसा बना. तो मार्जिन ऑफ एरर इज व्हाट रिसर्चर क्लेम्स. तो इसमें क्या होता है, अब वो फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे. वो रिसर्चर ना ये बताता है कि मेरा 68% डेटा ये लेवल के बीच में है, वो उसको एक नाम दे देता है सिग्मा प्लस माइनस, फिर वहां पे इधर जाता है, ऐसे आता है. तो ऐसे करके वो कुछ अपना मार्जिन ऑफ, बट यू डोंट हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट मार्जिन ऑफ एरर फ्रॉम SAT point of view, but there is a statistical formula which will calculate margin of error. There is also a statistical formula where you actually calculate कि आपका सैंपल साइज क्या होना चाहिए. अगर पॉपुलेशन 1 लाख का है तो मुझे कितना सैंपल लेना चाहिए सो दैट मैं कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी क्लेम कर सकूं. बट क्योंकि वो SAT के स्कोप में नहीं है, आपको इनके इंटरप्रिटेशंस पता होने चाहिए, दैट्स ऑल. Sir, the formula which is there to be done is that those are all that absolute error, percentage error, fractional error, relative error. नहीं, not required at all. No, वो नहीं है हमारे पोर्शन में, पर मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए वो सब रहता है ना, एब्सोल्यूट. जी, correct. We should be thankful that it does not come for SAT. It's way too long. Because वो 10th के syllabus में I guess in many boards it's not there. It's in 11th, sir. 11th physics second chapter. So they don't really quiz you on that, तो उस पे चिंता मत करो. But let's do a practice problem where I want to make you this understand. जैसे for example, ये question मैं share करता हूँ. I don't think this is there in your book. Let me share this problem here. So this comes from one of the sample papers. This says a random sample of 35 four-door passenger vehicle had a mean gas mileage of 25.9 miles per gallon. The estimate had a margin error of 2.6 miles per gallon at 98% confidence level. Of the following, which is the most plausible? देखो हमेशा रिसर्च में ना हम कोई भी टॉल क्लेम नहीं किया जाता है, वो लोग हमेशा पॉसिबल, लाइकली ऐसे वाले वर्ड्स यूज करते हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, डेटॉल हो, कॉम्प्लान हो, यू विल ऑलवेज सी दे विल यूज सच वर्ड्स. सो विच इज द मोस्ट प्लॉजिबल वैल्यू ऑफ ट्रू मीन. ट्रू मीन का क्या मतलब? पॉपुलेशन का मीन. अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने पॉपुलेशन को स्टडी करके मीन निकाला तो उसको ट्रू मीन बोलते हैं. तो पॉपुलेशन का मीन ऑफ ऑल पॉसिबल 4-door पैसेंजर व्हीकल, तो 35 का आपने सैंपल लिया था, इसको नंबर लाइन पे समझते हैं. आपका मीन क्या आया? 25.9. आपने इसमें एक मार्जिन ऑफ एरर किया 2.6, तो 2.6 नीचे जाओ तो दिस इज 23.3, 23.3 and 28.5, right? Yes. And they are asking of the 4 option, which is the plausible, possible population mean. 24 Yes, option. इसके रेंज में है, 29 रेंज के बाहर है, 32 रेंज के बाहर है, 35 रेंज के बाहर है. तो of the given 4 option, only this is one of the possible true mean population. बस ये फ्रेज जो हमने यहाँ पे देखा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ये मैंने आपको वो डॉक्टर वाले एग्जाम्पल में ये फ्रेज को कैसे समझना है ये समझाया है. एंड दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो. बोलो क्वेश्चंस कर पाओगे अब आप इसके? Yes, sir. Let's do one problem. Let me tell you which question to do. I want you to do challenge problem number 4. International flight वाला एक question है. I want you to do that. So the question Is can you not show? there? No, sir. Which one? Sir, not अच्छा, for me.
अच्छा जय वोरा के लिए, हाँ हाँ जय, एक मिनट एक मिनट। ये वाला, प्लीज डू दिस वन, चैलेंज प्रॉब्लम 4. %79% people want arrive flight within 15 minutes. Okay. Margin of error of 3% at 95% confidence level. Which of the following conclusion is best? Sir, I have a different question in my book. Okay, sir, you told sample problem 4. I did, so I did, no, challenge question 4. Challenge question 4 is different. It's actually ये कौन सा क्वेश्चन है? Challenge question International 3. flight. तो क्वेश्चन नंबर 3 डू क्वेश्चन नंबर 3. हाँ ठीक है ना, तो चैलेंज 4 भी डिस्कस कर लेंगे, 3 भी कर लेंगे. करो क्वेश्चन नंबर 3 करो, एंड द मोमेंट यू आर डन प्लीज रेज योर हैंड. वो वर्चुअली रेज करना हैंड को, सो आई विल कम टू नो. So can you show question number 3? आप अभी रुक जाओ, अभी ये करने दो लोगों को. ठीक है, सो सिमर, ये इंटरनेशनल फ्लाइट वाला आंसर बताओ, क्या आंसर है इसका? सी सर. सी, बिकॉज 79% मीन है, प्लस माइनस 3%, तो 76 से 82%. So between 76 to 82% arrived within 15 minutes of their scheduled time. This is one conclusion which I can draw best. बाकी सब I cannot. Exactly ये सब रिसर्च में नहीं बोल सकते. Correct guys. I came to know कि आपका हो गया है. अब आप लोगों ने कौन सा सॉल्व किया? Question 4 in the Question which 4. is in a poll of 1,578 randomly selected American adults. This one? Yes, yes. चलो ठीक है, ये भी करते हैं. So you can raise your hand. Vinayak, you want to solve this? Just raise your hand. Sir, actually I solved this. Well, done. So let me give this chance to somebody else. Ishan, you'll be happy, I know, if Iksha solves this. Iksha, please go ahead. Chalo. Come on, sir. Iksha, go ahead. Sir, He's listening. sir, I got the answer as option B. B for Bombay. Yes, sir. Okay, go ahead. Sir, I first subtracted 2.5 from So 44.8 and I got 42.3 Yes, correct. is the sample mean. Right. And then I added 2.5 and I got 47.3. Okay. And 43% was the only Value that was lying in answer between that that. lied between this. Yes. Correct. And answer is this. This is correct. Right, guys. Is there any other problem that I want you to solve? Yes, there is one more problem. Wait. ये वाला question भी करो, please. This is, रुको. Is this a challenge problem? ये sunflower वाला कोई question है क्या आप लोगों के उसमें? नहीं sir, नहीं है. The graph. No. ये challenge problem 2 है क्या? The graph shows the result of controlled experiment वाला. No sir, nothing is there. Nothing is there. In the textbook of sunflower type question. Let me see if I can get it. Guys, this is the last problem and then we'll call it off. This is an excellent problem coming from Khan Academy level 4. मैं चाहता हूँ आप लोग ये वाला question करें. The graph shows results of a controlled experiment designed by a scientist and so on. Please do this problem. I'll show you the options. पहले ये कर लो, फिर मैं options भी दिखाता हूँ. Sir, could you show the options? हाँ, एक second. Just the Hold. And you have a graph here
please go through the X and Y axis. So I'm going to the options now. The question says, based on the results of this experiment, which conclusion is not valid? Not valid conclusion. Okay, guys, here I go. A, B, C, D. Just type the answer in the text box and send it to me. Very good, Ishan. Correct. Correct, Chinmay. Very good. Jay Bora, ध्यान से पढ़ो. Read all 4 options, Jay. So could you just show the first slide once again? Yes, sir. Sure. Sure. Nishtha, what happened? Why is your video down? You there? Yes, sir. So can you show the options, please? Correct, Simar. Chalo, Man, what happened? Man, read the problem once again. आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए. जय बोरा, अब ठीक है. परी करेक्ट. निष्ठा, मान, विनायक. Yes. Correct, मान. इक्षा, गड़बड़. Redo. The option that you had sent me, उसको फिर से पढ़ो and really ask yourself, can you really not find this conclusion? ऐसा नहीं निकाल सकते क्या? Are other options better? Vinayak, ठीक है. So Vinayak, we start with you. Video on करो और आपको निकालना है, आपको ये बताना है rather from the above experiment which of the conclusion cannot be drawn. है ना? Read option C, Vinayak. Sunflower plants grow under lower magnetic field condition were more likely to be taller than sunflower plant grown under normal magnetic field conditions. ठीक है. आपने लोअर मैग्नेटिक फील्ड किसको दिया है? कंट्रोल्ड ग्रुप को, एक्सपेरिमेंट ग्रुप को. एक्सपेरिमेंट ग्रुप को आपने लोअर दिया था और कंट्रोल ग्रुप को आपने नॉर्मल रखा था, कोई लोअर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया था, राइट? अब वो देखो सी वाला कंक्लूजन. इक्षा, आप भी देखो, ये कंक्लूजन तो सही है. जिनको लोअर मैग्नेटिक फील्ड दिया, दे आर मोर लाइकली टू बी टॉलर देन जिनको नॉर्मल फील्ड दिया. या ये कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं विनायक, इक्षा? सर मैंने उल्टा ले लिया. Sir, same. हाँ. I also answered for the conclusion that is valid. हाँ. तो अब which is the right answer then? Sir, What is problem with Ishan? What is problem with option A? हाँ. क्यों The problem A with right option answer is? The problem with option A is because it claims that the weight of the plant will be more, whereas Very there's nothing good. given about the weight. There's nothing given about ये the देखो, weight. Because there's small nothing plants given also about weight of the plant. It is talking about height only. height. I didn't even read the other options. I remember, Very sir, one risky. question. Yeah, Very, there was. very risky. Yes, sir, but there was one question I remember you did with Atish in the later. That question also had a similar issue where they add something which they claim which is completely outside. So then if it's a completely outside claim, then there's no need to even read anything more. It's going to be wrong. I will not advise that. I will always advise read all 4. If you have read A and you have identified weight, फिर भी B, C, D पढ़ लो. ये SAT वालों को कोई भरोसा नहीं. पढ़ लो एक बार. But you are absolutely right in your analysis. There is nothing about weight that they are talking about. I think तुमने और चिन्मय ने इसको बहुत फास्ट किया था. तो और बाकी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे. So that's all from my side. Thank you. We conclude our session number 9 on this. Next 2 sessions, they would be taken by Uday sir and they will happen physically from Kharghar branch. और जो online कर रहे हैं वो online करते रहेंगे. Okay. Sir, Chalo. sir, Thank you. I have a few questions. Yes, My please.